वेलकम टू डिजिटल कश्माइला। आज हम देखेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी PSY 409 की असाइनमेंट और उसका सोल्यूशन। असाइनमेंट क्या है कि इन दिस असाइनमेंट यू विल एक्सप्लोर वेरियस रियल लाइफ सिनेरियोज एंड आइडेंटिफाई इंस्टेंसेस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस such as happy, sad, crying, anger, and fear, etc. For each scenario, identify the emotions depicted from the scenario and then in the column of justification, provide a brief justification in 3 to 4 lines in the given table. First scenario क्या है? Naila is alone in a dark, unfamiliar forest at night where she heard strange, unsettling noise in the distance. Her senses were on high alert and her breath came in shallow, nervous gasps. She felt a growing sense of unease and her imagination ran wild with thoughts of unseen creatures lurking in the shadows hidden by the inky blackness. तो इससे सिनेरियो को पढ़ने से हमें समझ आ रही है कि इसके जो इमोशंस हैं वो फियर और एंजाइटी वाले हैं, because Naila is experiencing fear and anxiety due to the unfamiliar and unsettling environment. The description of her high alert senses, shallow breath, and unease indicate a strong emotional response of fear. Second is Rabia received a phone call for admission of her graduation that she has been accepted into her dream college. ड्रीम कॉलेज से हमें पता चल रहा है और फिर फुली फंडेड स्कॉलरशिप है दैट इज जॉय एंड हैप्पीनेस बिकॉज राबिया इज लाइकली फीलिंग immense joy and happiness. The context of receiving admission to her dream college with a fully funded scholarship suggests a positive outcome leading to feelings of joy and happiness. The third one is हीरा इज एक मिनट मुझे थोड़ा इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ ताकि मुझे याद नहीं रहा करना, आप लोगों को क्लियर नजर आ सके। ठीक है। 3-1 is Hira, closest friend of many years, moves to abroad for higher studies and now she is saying goodbye to her at the airport. Obviously that is the moment of sadness and loss. Loss I think इसमें नहीं आएगा, शायद sadness तक ही ठीक है। Hira is experiencing sadness and loss as her closest friend is moving abroad. Loss इस आप ले सकते हैं इस कैटेगरी में कि मतलब उसे वो अब तनहा रहेगी या मतलब उससे कोई चीज तो जा रही है ना उसकी दोस्त, तो बेशक ये एक वक्ती लॉस है लेकिन ये आता है लॉस की कैटेगरी में भी, तो not a big deal. The act of saying goodbye at the airport indicates an emotional farewell, contributing to feelings of sadness and loss. आप लोग इसमें से एक एक ही कर लीजिएगा, कोशिश करना कुछ डिफरेंट इसकी जगह पे नाम लिख लें। Noor watched a heart-wrenching movie scene where the main character experiencing a devastating loss and he finds tears rolling down his cheeks. Sadness या empathy भी दोनों आते हैं। Noor is likely feeling sadness and empathy. The description of tears rolling down the main character's cheeks suggests a deeply emotional and sorrowful scene, evoking a similar emotional response in Noor. The fifth is Johan driving to work during rush hours and he got stuck in a long and slow moving traffic jam. He already left home early, but due to the congestion, he realized that he might be late for an important meeting. जाहिर सी बात है इसमें इंसान फ्रस्ट्रेट ही हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है या देर से पहुंचने की एक टेंशन की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। जॉन इज लाइकली एक्सपीरियंसिंग फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस, द कॉम्बिनेशन ऑफ बीइंग स्टक इन ट्रैफिक, लिविंग होम अर्ली एंड द रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियली बीइंग लेट फॉर एन important मीटिंग टू कंट्रीब्यूट द फीलिंग्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। ये हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन था। बहुत ज़्यादा इजी असाइनमेंट है, मार्किंग इसकी दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपने असाइनमेंट किसी की भी कॉपी नहीं करनी, कॉपी पेस्ट नहीं करनी बिल्कुल भी, वरना आपके 0 मार्क्स लगेंगे। ठीक है। इनमें जो मैंने नेम दिए हैं आप इनकी जगह पे हर एक वर्ड्स के बहुत ज़्यादा सिनोनिम्स होते हैं, तो आप कोई और नेम लिख लीजिएगा और फिर ये जो जस्टिफिकेशन है इसको थोड़ा सा अपनी तरफ से एड ऑन करके चेंज कर लीजिएगा। मेरे लेक्चर्स को भी जरूर फॉलो करें, मेरे चैनल को मस्त सब्सक्राइब करें, असाइनमेंट को शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।